Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Asima Jawad's Legal Alchemy, where I turn old legal stories into exciting lessons for you all. Today we are diving into the Ashby versus White case that was a real game changer in legal history. So let's dive into this fascinating case that I have spiced up just for you guys. Let's get started. Okay, so firstly we have a brief introduction of this case that this case is a foundational case in UK constitutional law and English tort law. It concerns mainly the right to vote and the misfeasance of a public officer. The case was heard in Court of King's Bench. The Chief Justice Lord Holt was the presiding officer. He made the final call as the main decision maker in this case. Now coming towards the facts of the case, that what really happened. So the plaintiff, Mr. Ashby, was the resident of Aylesbury and he was a qualified voter, but he was denied his right to vote in parliamentary elections by defendant Mr. White, who was a returning officer. And he was denied his right to vote on the grounds of non-permanent residency. So इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर एशबी है उसका राइट टू वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस मिस्टर वाइट ने सिर्फ इसलिए रोका इस बुनियाद पर कि वो नॉन परमानेंट रेजिडेंट था. The next thing here is that the candidate Mr. Ashby supported won, but the legal right of Mr. Ashby to vote was infringed. That is why he wanted compensation for his right being ignored. So Mr. Ashby claimed compensation for the violation of his legal right, and the defendant argued that no real harm occurred as the candidate whom the plaintiff wanted to vote won, while the plaintiff claimed that his legal right to vote was violated. सो मिस्टर एशबी जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे उसको मिस्टर एशबी वोट तो नहीं दे सके, लेकिन वो कैंडिडेट जीत गया था. लेकिन मिस्टर एशबी ने फिर भी जो है कॉम्पनसेशन का क्लेम किया इस वजह से कि उनका वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है, और वो वायलेशन ऑफ लीगल राइट ये हुआ है कि उनको वोट देने से रोक दिया गया है विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न. और जो डिफेंडर मिस्टर वाइट थे उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट अपना तरफ से पेश किया कि कोई रियल हार्म तो नहीं हुआ मिस्टर एशबी को, क्योंकि वो जिसको वोट देना चाहते थे वो तो जीत गया है. लेकिन ऑन द अदर हैंड मिस्टर एशबी जो कि प्लेंटिफ है उन्होंने ये क्लेम किया कि उनका लीगल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, और वो लीगल राइट था राइट टू वोट. नाउ द हेडिंग ऑफ दिस स्लाइड इज वेयर वोटिंग राइट्स क्लैश विद ऑफिशियल रॉन्ग्स. सो मैंने फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन की बताया था कि ये केस मेनली दो चीज़ों को कंसर्न करता है. मैंने दोबारा वही चीज़ लिखी है. दिस केस कंसर्न्स द राइट टू वोट जो कि फर्स्ट चीज़ है, एंड जो दूसरी चीज़ है वो है मिसफीजेंस ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर. टू फर्दर एक्सप्लेन दिस थिंग मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया है दैट misfeasance in the Ashby versus White case means that Mr. White, the returning officer, did a wrong act while performing his duty. That was unlawfully denying Mr. Ashby's right to vote in the parliamentary elections. So जो मिस्टर वाइट हैं वो एक ऑफिसर थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान एक ऐसा एक्ट किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, जो कि गलत एक्ट था, क्योंकि उन्होंने अनलॉफुली मिस्टर एशबी का राइट टू वोट जो है उनसे ले लिया, उनको रोक दिया कि वो वोट नहीं दे सकते पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में विदाउट एनी जस्टिफाइड रीज़न. सो जब ये केस हुआ तो दिस ऑल्सो स्पार्क्ड नेशनल कॉन्ट्रोवर्सी इन एडिशन टू पार्लियामेंट्री डिबेट. There was a big argument across the country and even the important people in the parliament started talking about it. So ये केस इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है क्योंकि इसने एक नेशनल कंट्रोवर्सी बना ली थी और बहुत ज़्यादा लोग जो पार्लियामेंट में थे वो भी इसके बारे में डिबेट करना शुरू कर दिया और इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई थी फिर. Now coming towards the main issue of the case, that was the big question that can the plaintiff seek compensation without actual damage? I have simplified this question in the next point, that is, for violation of legal right without tangible harm, is it possible for plaintiff Mr. Ashby to receive compensation without experiencing any harm? तो इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर एशबी हैं क्या उनको कॉम्पनसेशन मिल सकती है इस बुनियाद पे कि उनका वोटिंग राइट जो है वो मेस्ड अप हुआ है, कि उनको राइट टू वोट से रोका गया था. सो इन सिंपलर टर्म्स द क्वेश्चन हियर इज दैट can he be compensated for a violation of his legal right even if he did not face any obvious harm?
मतलब कि उनको कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ और वो जिस कैंडिडेट को वोट करना चाहते थे वो भी जीत गए, तो अपेरेंटली देखा जाए तो उनको इस तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनका लीगल राइट वायलेशन हुआ है। तो क्या इनको इसकी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए या नहीं? सो दैट इज द मेन इशू ऑफ द केस. Now coming towards the judgment of the case, that what was actually the court's decision to this matter. So the court ruled in favor of Mr. Ashby. इसका मतलब है कि कोर्ट ने मिस्टर एशबी के फेवर में रूलिंग दी थी, डिसीजन दिया था. The court said that Mr. Ashby deserves something for the violation of his legal right. Application of injuria sine damnum, injury without damage rule. इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने इस मेन लैटिन मैक्सिम की एप्लीकेशन की थी, that was injuria sine damnum, injury without any damages. So the legal injury was recognized and the compensation was awarded. The Chief Justice Holt said that any injury counts even if it does not cost a penny. इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ने ये बोला, जो कि मेन डिसीजन मेकर थे, उन्होंने ये बोला कि कोई भी इंजरी जो है वो काउंट करती है, बेशक उसमें 1 रुपए का भी नुकसान ना हो. अगर वो लीगल राइट का वायलेशन है तो वो लीगल इंजरी है और उसका रेमेडी भी मिलना चाहिए, उसकी कॉम्पनसेशन भी ज़रूर मिलनी चाहिए. So Ashby was granted damages for public office misconduct that was done by Mr. White, and the higher court later affirmed his right to compensation, overturning the initial judgment. इससे इस चीज़ का भी हमें अंदाज़ा होता है कि लीगल राइट कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर उसकी वायलेशन हो, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग कि आपको नुकसान हो या ना हो, आपको कॉम्पनसेशन ज़रूर मिलेगी उस चीज़ की. Now coming towards the main principles that were used in this case were two. The first one that we have is injuria sine damnum. This means injury without damage. To simplify it more, we can say that even if nothing is broken, if someone messes with your rights, you should get something back for it. This means that you should get compensated because law cares about legal harm, not just the physical harm. The second principle that is used here is ubi jus ibi remedium, and the translation of this maxim is where there is a right, there is a remedy. This means that if someone's rights are hurt, they should get compensation for it. Using the idea of this maxim in the Ashby versus White case here, it is like saying that where there is a right, there should be a fix to it, means there should be a remedy to it. So the court made sure that Mr. Ashby got what he deserved for being treated unfairly in his voting rights, as we have observed in this case. Now coming towards the significance of this case, that why it matters. इसका मतलब ये है कि इस केस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों ही है, क्यों ये इतना मैटर करता है. So उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें से मेन रीजंस मैंने यहाँ लिखी हैं, or you can say that I have covered mainly all of the reasons. Because it is a famous case, it made history in tort law. As I discussed earlier कि इससे national controversy भी spark हुई, पार्लियामेंट में डिबेट्स भी हुई, और इस केस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इस तरीके से. और इस केस का जो जजमेंट हुआ था उससे हमें ये नज़र आया कि इट शोज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्रोटेक्ट लीगल राइट्स, कि आपके लीगल राइट का प्रोटेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ़ समवन मेसेज विद योर राइट्स, यू शुड गेट समथिंग नो मैटर इफ़ यू लूज़ मनी फॉर इट और नॉट. मतलब इसका ये है कि अगर कोई आपके राइट्स के साथ गलत करे या आपके राइट्स की खिलाफ वर्जी करे, तो आपको उसके रिटर्न में ज़रूर आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, बेशक आपके उसमें पैसे का नुकसान हुआ या नहीं हुआ. अगर आपका लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो दैट इज़ मोर देन इनफ टू गेट कॉम्पनसेशन. This case also teaches us that protecting our rights is a big deal. For example, if someone is messing with your rights, you should get something back even if you did not lose any money. That I said earlier, and I am again and again highlighting this thing कि अगर आपके लीगल राइट की कोई वायलेशन कर रहा है तो आपको ज़रूर उसकी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए. ये चीज़ मैटर नहीं करती कि अगर आपके सिर्फ और सिर्फ कोई मॉनिटरी डैमेजेस हुए हैं, कि आपको कोई पैसों का नुकसान हुआ है. अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है और आपको पैसों का नुकसान नहीं हुआ, तो फिर भी आपको उसकी कॉम्पनसेशन ज़रूर मिलनी चाहिए. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फन फैक्ट्स ऑफ द केस, बिकॉज हमने इस केस के मुतालिक बहुत सीरियस बातें की हैं. सो हम अब कुछ लाइटर नोट पे इस केस के बारे में चीज़ें देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं. सो दिस केस इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम एल्सबरी इलेक्शन केस. सो इफ़ समवन सेज यू दैट व्हाट इज़ द एल्सबरी इलेक्शन केस, तो basically you should know that they are referring to the Ashby versus White case.
So this case is not just any case, it's a rock star in the world of tort law. इसका मतलब ये है कि इसको कितना ज़्यादा हाइप मिला, इसको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, हम वो पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. And it is like you can say the celebrity of legal stories. And we have to remember the golden rule here जो derive हुआ था, injury without damage, injuria sine damnum. और इसका मतलब ये है द फैंसी वे ऑफ सेइंग जस्ट लाइक लीगल हार्म इज़ अ बिग डील इवन इफ़ योर वॉलेट डज नॉट फील द पिंच. मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ कि अदलो इंसाफ हमेशा ज़रूर मैटर करता है. अगर आपको कोई पैसों का नुकसान नहीं हुआ, अगर आपको कोई फिज़िकल इंजरी नहीं हुई, लेकिन अगर आपका कोई राइट लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो उसकी आपको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए. क्योंकि ये लॉ की नज़र में बहुत बड़ी बात है कि आपका लीगल राइट वायलेट हो, और लॉ इस चीज़ की कदर करता है कि किसी भी इंसान का अगर लीगल राइट वायलेट हो तो उसको उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए बेसिकली. एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज लेक्चर. यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. आई होप यू एन्जॉयड और लीगल जर्नी टुडे. और अगर आपको अच्छा लगा है ये लेक्चर सुन के और आपको इससे हेल्प मिली है तो don't forget to give this video a thumbs up, hit subscribe and ring the bell icon to stay tuned for more legal adventures. And also I am making these interesting PowerPoint slides to simplify and to add a touch of fun to your learning experience. I hope you are enjoying the content. Please give me your suggestion in the comments below. And your support means a lot to me, so please consider subscribing, sharing with your friends, and let's embark on this incredible journey together. And also it is your turn to speak now, because I want to know that what is your take on voting rights and fairness in the legal world. Drop your thoughts in the comments below and let's spark a conversation that is healthy, and let's learn something from each other. Remember, your opinion matters, so don't hesitate to share it. I will be very happy to read your comments. And also, one thing more, that drop your thoughts in the comments. Did you enjoy the mix of English and Urdu in today's video? Or do you prefer it in just one language, English? Let me know if you prefer the content in both English and Urdu. So then I'll make what you guys want, because your suggestions shape the content. सो या काइंडली अपना सजेशन दिएगा कि आपको क्या इंग्लिश और उर्दू मिक्स वीडियोस ज़्यादा पसंद हैं या फिर सिर्फ एक लैंग्वेज इंग्लिश में बनाऊँ. एंड या दैट्स इट. Until next time, I am Asima Jawad signing off. Take care, stay curious, and keep on learning. Allah Hafiz.